Good evening, sir. Good evening, Sir, Srijan. I had a doubt, sir. I हाँ wanted बोले to बोलो मुझे बोलो ये बोलो पूछना था, मैं लास्ट क्लास का वीडियो देख रहा था एंड उसमें आपने हायरार्की मॉडल बताया था एक। करेक्ट करेक्ट यस यस उसमें मुझे ये पूछना था कि हाउ वन डिसाइड कि मुझे किस मॉडल के अकॉर्डिंग अपने चैनल को करना, मतलब अपने प्रोडक्ट का चैनल डिसाइड करना चाहिए। चैनल डिसाइड करना चाहिए या हायरार्की डिसाइड करना चाहिए? हाय सॉरी सर, मतलब हायरार्की कैसे डिसाइड करनी चाहिए, मतलब हाँ व्हाट सो काइंड ऑफ प्रोडक्ट। डिपेंड्स ऑन द कंपनीज पॉलिसी आल्सो ना। कंपनी अगर सोचता है कि मैंने उतने डिटेल्स में तो हायरार्की मॉडल पढ़ाया नहीं, जस्ट गिव मी सेकंड, सौरभ ने कुछ मैसेज किया, देख लेता हूँ। ओके ठीक है, सौरभ इज नॉट जॉइनिंग। सो मैंने उतनी डिटेल्स में तो हायरार्की मॉडल पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट टू टेल यू कि ये जो प्रोडक्ट हायरार्कीज होते हैं ना, फॉर डिफरेंट कंपनीज दे हैव डिफरेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो सम कंपनीज फील दैट नहीं अम्ब्रेला ब्रांड होगा, ठीक है, हमारा ब्रांड ही मेन होगा, कंपनी का ब्रांड मेन होगा, एंड देन पॉसिबली उसके नीचे हम बाकी ब्रांड रखेंगे। ठीक है, सब कंपनीज फील मेरे जो ये सब ब्रांड्स है, सपोज नेस्ले के नेस्कैफे, मैगी, पोलो, दीज आर ऑल सब ब्रांड्स। ठीक है, तो वो बोलेंगे वी विल नॉट से इट्स अ नेस्लेज नेस्कैफे। ठीक है, वो नेस्कैफे ब्रांड हिसाब से प्राइमरी ब्रांड नेस्कैफे ही रहेगा। ठीक है, इट विल नॉट बी अ सेकेंडरी ब्रांड की नेस्ले के। सो अकॉर्डिंगली अगर कुछ कंपनी है जो बोलते हैं कि आज सपोज टेलीविजन, मैंने एक एग्जांपल शायद वहां पर दिया था, पता नहीं याद नहीं आ रहा है, कि ईएसपीएन इज अ चैनल, राइट? ईएसपीएन डिज्नी का एक एंटरटेनमेंट चैनल है। अभी ईएसपीएन ने जब अपना दुकान खोला तो ईएसपीएन ने बोला नहीं हमारा ब्रांड इज अम्ब्रेला ब्रांड, दैट्स द मेन ब्रांड, उसके नीचे सारे ब्रांड रहेंगे। तो उसके पॉलिसीज वैसे ही बनेगी, ईएसपीएन एंटरटेनमेंट, ईएसपीएन स्पोर्ट्स, ईएसपीएन टीवी, ईएसपीएन रेडियो, सब कुछ ईएसपीएन। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच कंपनी टू कंपनी पॉलिसी पॉलिसी वाइज दे डिसाइड। यूनिलीवर्स जैसे बोलते हैं नहीं हमारा सब ब्रांड्स आर द मेन ब्रांड, सर्फ एक्सेल इज अ मेन ब्रांड, रेन इज अ मेन ब्रांड, यूनिलीवर विल बी अ फैमिली ब्रांड। ठीक है, वो अपना फैमिली रहेगा, अपना अम्ब्रेला रहेगा, फाइन, बट मेन ब्रांड को हम लोग हाईलाइट करेंगे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आज इतने सारे प्रोडक्ट ब्रांड्स है उसके अंदर में, तो अगर अगर वो यूनिलीवर्स अपने आप का ब्रांड को अगर हाईलाइट करे और उसको हायरार्की में टॉप में रखे, तो देन प्रॉब्लम इज कि बाकी सारे ब्रांड खो जाएंगे। ठीक है, सो यूनिलीवर्स डिसाइडेड कि नहीं वी विल टेक ऑल द ब्रांड्स जो हमारे हैं, सर्फ, रिन, एक्सेल, लैक्मी, जो भी है, दे विल बी इंडिविजुअली ब्रांड्स। ठीक है, सो वो यूनिलीवर के सब ब्रांड्स नहीं रहेंगे, दे विल बी प्राइमरी ब्रांड्स एक्चुअली। ठीक है, सो इस तरह से दे डिसाइड, एवरी कंपनी डिसाइड्स देयर ओन ब्रांड हायरार्की। इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी मेकिंग, एंड नॉट ओनली पॉलिसी, दे आल्सो द पर्पस। आज जैसे यूनिलीवर्स है या सपोज एडिडास, ठीक है, एडिडास है, एडिडास अपना अपना जो टोटल ब्रांडिंग है, मैं एक स्लाइड खोल के आप लोगों को बताता हूँ, अभी अभी मैंने पढ़ाया है, सो जस्ट ओपन द स्लाइड एंड इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो आपको स्लाइड दिख रही है? यस सर। या सो दिस इज एडिडास, बेसिकली एडिडास ब्रांड। पहले तो तीन चीज होते हैं, एक है ब्रांड आर्किटेक्चर, ठीक है, जहां पर हम स्टार्ट करते हैं बेस से, दिस इज द ब्रांड आर्किटेक्चर पिरामिड, जहां पर हम पहले प्रोडक्ट फीचर्स, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, लिखते हैं, फिर उसमें ब्रांड बेनिफिट्स लिखते हैं, प्रोडक्ट बेनिफिट्स लिखते हैं, देन इमोशनल बेनिफिट्स लिखते हैं, फिर हम लोग ब्रांड पर्सनालिटी होती है उसको लिखते हैं, देन वी से व्हाट इज द ब्रांड एसेंस। दिस इज अ ब्रांड आर्किटेक्चर फॉर एवरी कंपनी के ब्रांड्स, जो भी ब्रांड है। ठीक है, अभी एडिडास का अगर ब्रांड पोर्टफोलियो बोलो, ब्रांड हायरार्की बोलो, सो एडिडास फर्स्ट, इसको तीन एडिडास मेन जो जो अम्ब्रेला ब्रांड है एडिडास, ये इसको तीन पर्पस में सब डिवाइड करता है। द फर्स्ट पर्पस इज परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस में ये वाली जो लोगो है लेफ्ट साइड वाली, ये लोगो परफॉर्मेंस में डालते हो, एंड परफॉर्मेंस के अंडर में अगर देखा जाए तो चार सब ब्रांडिंग होता है। एक है फुटबॉल के लिए, एक बास्केटबॉल के लिए, एक रनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इसके सब ब्रांडिंग्स होते हैं या तो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो ये जो सेंटर वाली है दैट्स फॉर द परफॉर्मेंस, और इसके अंडर में एडिडास
देखो चारों डिफरेंट डिफरेंट लोगोज है इसमें, ठीक है। दीज आर ऑल सब ब्रांड्स ऑफ एडिडास, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रनिंग एंड ट्रेनिंग, ये 4 डोमेन्स में वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडिडास लेबल्स, ठीक है। एडिडास लेबल्स है ये राइट वाला कि नियो, Y3, SLVR एंड रॉकपोर्ट, दीज आर ऑल मोस्टली एडिडास जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, स्पोर्ट्स वेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। उनके लेबल्स है, दे आर नोन एज एडिडास लेबल्स, ठीक है। और लास्ट वाला होता है एडिडास ओरिजिनल्स, ये जो लेफ्ट वाली देख रहे हो यहाँ पर, एडिडास ओरिजिनल, टेलर मेड और एडिजरो, रीबॉक, दीज आर ऑल एडिडास ओरिजिनल। तो इनका जो ब्रांड हायरार्की होता है, प्रोडक्ट ब्रांड हायरार्की होता है, ये ब्रांड हायरार्की इज ऑन द पर्पस, एक है परफॉर्मेंस, एक है स्टाइल, एक है ओरिजिनल्स, ठीक है। सो एंड उसके अंडर में, परफॉर्मेंस के अंडर में एडिडास कैटेगरीज है, एडिडास लेबल्स है, एडिडास कलेक्शंस है, ठीक है। एडिडास जो एडिडास ओरिजिनल्स है ये वाली, जो लेफ्ट वाली, ये लेफ्ट वाली में दीज आर ऑल एडिडास कलेक्शंस, ठीक है। रिबॉक कलेक्शन, एडजीरो कलेक्शन, टेलर मेड कलेक्शन, एडी प्योर कलेक्शन, ठीक है। इसी तरह से दे हैव डिसाइडेड कि हमारा ब्रांड पोर्टफोलियो इस तरह पड़ेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, 3 पर्पस, एक है परफॉर्मेंस पर्पस, एक है स्टाइल पर्पस, एक है ओरिजिनल पर्पस, ठीक है। ये तो मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ आइडिया देने के लिए, ठीक है। सो आर्किटेक्चर, हायरार्की एंड these are 2 things which come together actually, ठीक है ना। आर्किटेक्चर के अंदर भी हर एक ब्रांड के सब ब्रांड्स बनते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कितने सब ब्रांड्स रहेंगे, कितने ब्रांड्स रहेंगे, कितने अम्ब्रेला ब्रांड्स रहेंगे, कितने, कौन सा फैमिली ब्रांड होगा, कौन सा ब्रांड ऑफ फैमिलीज होगा, कौन सा फैमिली ऑफ ब्रांड्स होगा, these are all things needs to be decided, lot of things needs to be decided if I go into deep of branding, ठीक है ना। okay, yes sir, okay, चलो I'll come back to any other questions। अच्छा सृजन, मैंने एक छोटा सा केस स्टडी दिया था, इस पे आपने देखा होगा। तो मैंने बोला था आप लोग तीनों आधा घंटे 2-3 दिन निकाल के वो केस स्टडी प्रिपेयर करो, ठीक है। एंड मुझे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे देना तीनों मिलके कि दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड एंड दिस इज व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस केस, ठीक है। कितना दूर है, मैं कहाँ तक पहुंचे उसमें? अभी सर पेंडिंग चल रहा है, अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है सर। अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, बट इंडिविजुअली पढ़ा है केस को? हाँ, इंडिविजुअली करा है सर स्टडी। इंडिविजुअली केस पढ़ा है? यस सर। ओके, ठीक है। इंडिविजुअली हम माइट भी हमने सबने फाइंडिंग्स करा होगा जो दिया होगा, ठीक है बट लेट एक सेम प्लेटफॉर्म पे हम उसको डिस्कशन करके फाइनल प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे सर। ओके, 5-6 स्लाइड का प्रेजेंटेशन, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। राइट, करके रेडी करो सो दैट वी कैन वन ऑफ द सैटरडे संडेज थोड़ा टाइम बिता के हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। राइट, ओके, चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हम लोग उस दिन जस्ट शुरुआत ही किए थे इसकी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सेल्स एंड सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर हम लोग ने बोला था 10 क्वालिटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल सेलर, एंड फिर हम लोग बोले थे एवोल्यूशन ऑफ पर्सनल सेलिंग, ठीक है। सो अभी पर्सनल सेलिंग इन द सेंस 1:1 सेलिंग, एक सेल्स पर्सन जाके जब सेल करता है, ठीक है, एक सेल्समैन जाके जब सेल्स करता है उसको पर्सनल सेलिंग। उसमें क्या क्या रहता है? उसमें परसुएशन रहता है, ठीक है। परसुएशन इन द सेंस जब आप अपने कस्टमर के पीछे पड़ते हो ना, उसको व्हेन यू परसू अ कस्टमर, ठीक है। उसमें नेगोशिएशन रहता है, उसमें कंसल्टेटिव सेलिंग रहता है, एक दूसरे के साथ बात करके देन वी अंडरस्टैंड the need of the customer and then we try to sell the product, consult करके we try to satisfy the need and then we sell the product to them। उसमें बिजनेस मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ सेलिंग इज आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ऑल द 3, ठीक है। सेलिंग इज एन आर्ट बिकॉज कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज एन आर्ट, ठीक है। इट्स अ साइंस बिकॉज इट हैज अ प्रोसेस, ठीक है। एंड इट्स अ कॉमर्स बिकॉज देयर इज बिजनेस इन इट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात है, रेवेन्यू की बात है, प्राइसिंग की बात है, कॉस्ट की बात है, दैट्स व्हाई इट्स अ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। एंड फाइनली पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, व्हेन यू हैव अ क्लाइंट और अ कस्टमर हु इज परचेजिंग फ्रॉम यू, ही इज एक्चुअली बिकमिंग योर पार्टनर इन प्रोग्रेस, ठीक है।
So from persuasion to partnership strategy, it's a process evolution of selling skill. एक जमाने में सिर्फ हम जाते थे as a salesperson, हम लोग जाके सिर्फ परसू करते थे, रिक्वेस्ट ले लो ले लो ले लो, खरीद लो एक्सेट्रा, ठीक है। धीरे धीरे हम नेगोशिएशन करना शुरू किए, एक दूसरे से बात करके बार्गेनिंग करना, नेगोशिएशन करना, getting into a win-win sort of a strategy, ठीक है। And then slowly we started the consultative selling. एक दूसरे से बात करके समझ के what do we need, what does my customer need from me, and am I able to satisfy the customer's needs, and all those considerations के बाद हम selling करते थे। And in fact, to be very honest, you know, अगर इसको थोड़ा सा आगे ले लिया जाए, there is a huge process of, just a second, there is a huge process of selling actually, जो primitive age से था। It's not a new thing, something new. It has been there for primitive ages. ठीक है, एक जमाने में selling was started from possibly 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 years back. There was selling. ऐसा नहीं कि selling was not there. People needed things and people got their things. And how did they do it? So it started basically from it's possibly started from some time where we started एक primitive age में barter system होता था. There was no currency, there was no money, so there was a barter system. I need something and you need something. We used to exchange those things. ठीक है. So in those primitive days वो barter system हुआ करता था. ठीक है. Anyway, छोड़ो. And then barter के बाद आ गया, you know, slowly currency came in. ठीक है, करेंसी केम इन, राजा महाराज का जमाना आया, देन करेंसीज केम इन, गोल्ड कॉइन, पहले तो इनफैक्ट मिट्टी के कॉइन बनते थे, देन स्लोली अदर मेटल कॉइन्स, देन इट वाज गोल्ड कॉइन एंड सो ऑन. व्हेन द कॉइन्स स्टार्टेड कमिंग इन, इंस्टेड ऑफ बार्टर देयर वाज एक्सचेंज ऑफ कॉइन एंड द मर्चेंडाइज. ठीक है, मुझे चावल चाहिए, श्रीचंद डोंट डू दैट, मैंने आप बोर्ड पे हाथ मत लगाओ क्योंकि आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग. या सो that is the time when you used to exchange with coins. So you needed rice, I will give you five coins and you give me 100 kilos of 100 tons of rice or something like that. Okay? So that was the time when coins came in first, and then started actual selling process. Okay? The first selling process actually was when I used to go and just pitch my product for price. So it was called price selling. So when coins came in, it actually became a price selling, that you need 5 kilos of rice. The price is one gold coin and you take it. So that was price selling, simply price selling. Okay. Then the salespeople said, no, price selling is not working. There's only bargaining what is there. Slowly they converted that into features, advantages, features selling. Okay. So that's the time they would say, okay, this is a basmati rice, this is a non-basmati rice, or this is a, this product has this feature and so this is good, and they used to sell it. So that was feature selling. Slowly that moved into features, advantages, and benefit selling. Okay, because people understood that features do not sell. One pen and the other pen, if they both have same features, it will not sell. If one has a more benefit than the other, then only it will start selling. Okay. So they converted their selling pitch into features, advantages, benefit selling. So they slowly evolved. As the selling process evolved, the selling became more and more meaningful. Okay. So एक ज़माने में it was only one way. So मेरे को इतना coin चाहिए, आप इतना माल ले लो. उसके बाद feature. My product has this feature, you buy it. Then slowly it was only feature, advantages, and benefits. Still, that was not great. Okay, because people always, it was only a one-way communication. My product has these features, this advantage, these benefits, and you buy it. And then they said, no, this is also not good. Okay, there was something called relationship beyond a feature, advantage, benefit. So then they started selling on relationships. Okay, they used to make relationships, and they used to pitch their product through their features, advantages, the benefit. The better relation a salesperson had, the better sales he had. And then they said, no, even relationship is not working working to some extent. Beyond that, it doesn't work. What do I do? Because people have their own needs, their wants and demands, and we need to satisfy their needs, wants, and demands. And that is the time when consultative selling came. And we call this period as a golden period of selling, and we say it is
it is a consultative selling, it's a need satisfaction selling. If Meg has some need, then only he will buy my product. So I need to understand that need of Meg's and then satisfy his needs with my product's features, advantages, and benefits. My product may have 50 features, advantages, and benefits. Meg may not need all of them. Meg may need one or two of them. If I have to first understand what does Meg need, and accordingly I will pitch my features, advantages, and benefits. Correct. And that is the time when I am sure if I can satisfy his needs, then only he will buy my product. Price doesn't become the main thing then. If I can satisfy his need perfectly, then for any good price, he will buy my product. Today, this has again evolved. It was need satisfaction selling till now that we used to have a consultative discussion with the client, with the customer, with the consumer, and try and sell it. But today, it has become one step ahead. It's basically providing solution. You are a solution partner to your customer. Okay, a partner has some problems, some pain points, some challenges. You as a salesperson is there to provide solutions to him. If you can provide solutions to him, you will have a great relationship to him. He will buy whatever product you want to sell him. Okay, so we are solution providers today. So along with consultative selling, need satisfaction selling, we go and actually provide solution to our customers, and then he accepts to buy a product. Think about any product that you have bought one-on-one, even in your companies. ठीक है, आपने कोई product खरीदा किसी vendor से, until unless that vendor gives you a solution to your problem. ठीक है, you are not going to buy just. I want to buy a photocopier in my office. So there are 3 different companies who come to sell photocopiers. There is Epson, there is Xerox, and there is Canon. 3 companies come to me, and each company tells me these are the features there. It has Wi-Fi, it has 100 copies per minute copy facility. This is a color printer. This, that, हजारों features, advantages, benefits बता दिया. तीनों ने बता दिया. ठीक है. However, this one of these 3 will come and ask you, sir, what is your problem? What is your challenge? No, I have a challenge that my office has grown from 5 people to 50 people. Now there is a huge need of photocopying every day because we print out this, that, etc., etc. And our cost is going up. We need to reduce the cost. At the same time, we have the best output. Then I understand, okay, this is the problem. I have to provide him a solution. Then I give him the right solution. So I think this is going to suit you the best. It gives you 100 pages per minute output. 100 pages per minute output. It has a color printing, a Wi-Fi, which anybody from any corner of this office can get it printed. And finally, sir, this also has a very low cost of 1 paise per page. Okay, that becomes a better way to sell the product. That person understands he has given me a solution. He has not only satisfied my need, he has given me a solution. Correct. Okay, so that's basically solution providers. Okay, he becomes the partner in progress for that person, partner in progress, partner in sales for that client or customer. Okay. यहाँ तक ठीक है? All good? मेरे को जबरदस्त सर्दी खांसी और पूरा गला चोट के पड़ा हुआ है, इतना सूख रहा है गला. Okay. There are 5 different concepts. I don't remember whether we have discussed it earlier also. So for any organization, there are 5 concepts that they work on. Okay. First is if it's a manufacturing organization, it's a product-oriented organization which has some goods, some services. The first concept is production concept. Okay. मुझे produce करना है. If I need to produce a good, I need to have a manufacturing unit, a plant, a procurement, a plant machinery. If I have to produce a service, I have to produce a service like a garage service, and I have to have that space for garage. I have to have the tools for garage. I have to have everything where I can produce the service there. Okay. So that's a production concept. Then there's a product concept. Whether that product is a good, a service, an idea, a software, whatever is the product. Okay. We need to design that product. We need to
price that product, we need to promote that product, we need to place that product, right? We learned about these, right? In the marketing basics, ठीक है? 4 P's use करना पड़ता है for products, ठीक है? Then the selling concept. So the one end is production concept, then you make the product, then you sell it. ठीक है? The selling concept, the selling can be different ways of selling. 101 selling, you can be a B2C customer, business to consumer customer, B2G customer, B2B customer, selling whatever. Okay, there's a selling concept. And there's a marketing concept. What is that marketing concept? Basically, what we mean marketing about it is basically promotions, communication to the consumer. Okay, providing enough and more knowledge about your brand and product to the consumer. And through different channels, traditional channels, हमारे पास TV, radio, newspaper, billboards, सारे हैं. उसके अलावा जो mass channels है, TV, radio, newspaper, billboards, bus shelter, paintings, railway paintings, whatever. ठीक है. And digital channels जो हमारे पास है, below the line activities, जो sales promotion है, जो events है, वगैरह वगैरह वगैरह. Through that we promote our product, communicate our product. And finally, the social concept. I am a social being. Every organization is a social being. He has to be in the society. So he has to look for good of the society. He can never harm the society, right? So he also has to follow the social concept, as they say. Okay, what good can I do to the society? Okay, with my product, with my marketing, with my other activities in the society. आज मैं अगर pollution भी कम कर रहा हूं, तो that's something which I'm doing for the society. आज मैं अगर CSR कर रहा हूं, that's also something which I'm doing to the society. If I'm producing some education to the society, if I'm even giving some education to the society, I'm providing some, social. I'm supporting the society. So these are all societal concepts. So an organization has all these responsibilities, and they continuously perform these responsibilities. Okay. And then when I talk about the societal marketing concept, then when we talk about that, we say that a customer has some needs, emphasizes the seller's need, and then we produce a product and then we sell it to the customer. ठीक है, पहले आपको customer का need जानना पड़ेगा, then you produce it and then you sell it back to the customer. ठीक है, and similarly, the customer's needs gives us production. We produce products, we sell to him, and we again, from after selling, we emphasize the customer's needs again because he's giving us feedbacks. Okay, it goes back to the customer. Emphasis on the customer's needs. It goes back to the customer. So customer and sales and production all are interrelated actually. जो मैं always बोलता रहता हूँ, keep the customer in the focal point, keep the customer at the center. So see, for everything, I'm keeping the customer at the center. Customers' needs to production to sales, and again, emphasis on customers' needs, which goes back to customers' needs to production to sales. Okay, I can only sell the product if I emphasize on the customer's needs. Correct. Nature and role of a sales manager. What does a sales manager do? Specific duties and responsibilities of sales manager, the determination of sales force objectives and goals. उसके अंडर में उसके साथ काम करने वाले sales force रहते हैं, sales people रहते हैं. ठीक है, so determining their objectives and goals, their targets, their quota, what do they want to do, what do they want to achieve. ठीक है. Then sales force organization size, territory, quota. That is, quota means the target, volume target, value target. Finalization of that, deciding on the territory what each salesperson would be covering, deciding on the size of that territory, deciding on the organization of the total sales force under him or under the sales management. Whether there is a national sales manager, there are 4 regional sales managers, there are a couple of zonal sales managers, there are area managers, there are sales officers and sales executives. So that's the whole structure. And that organization also sales management has to decide. Then sales forecasting and budgeting. That's one of the most important thing of the salespeople. That forecasting future sales. Okay, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, 5 year forecasting of sales. Because remember, depending on the sales volume, sales revenue, sales budgets, a lot of things depend for the companies. Lot of things. Okay, how much should I produce? What kind of activity should I do? What kind of marketing activities should I do? How much money does the company need to invest? Everything depends on forecasting. You can't suddenly come up and say that I am selling 100, tomorrow I will be selling 200. Okay. There needs to be a lot of planning behind it. At least 1 year
yeah, at least 6 months before you need to forecast that, okay, I am planning to sell 100, say 200, and accordingly company will decide मुझे raw material चाहिए, मुझे factory का expansion करना है, मुझे budget बढ़ाना है, whatever. ठीक है, the forecasting and budgeting is a very important aspect of a sales team. And of course, sales force recruitment, selection, recruitment, training, these are of course ongoing things that we need to do. ठीक है, nature and role of sales manager में ये भी आता है कि they need to motivate their sales force, because to motivate sales team is a challenging task, because it's a regular mundane job that they continuously do. They run behind the targets, they work in the field in stringent conditions. Okay, their life is not that easy. At the same time, without the sales force, the company cannot survive, because they are the only team who actually earns revenue for the organization. Correct. So we need to keep them motivated. If they don't work in the market, if they don't work in the market, they don't bring the sales, they don't bring the revenue, company is not going to make profit. So इसीलिए we need to, the maximum motivation is required for the sales team, and company does that. Every organization does that to keep the sales team motivated with different kind of things. We'll come to know about that. Designing compensation plan and control system. Compensation plan is their salaries, their incentives, their commissions, okay, and control system also, because they're all working in the field. Whether the sales team is actually working well, working according to the plans, according to the strategies, that needs to be controlled. Okay. If you don't control as a manager or as a sales team head or as a sales team supervisor, if you cannot control your team, you don't know what your team is doing, because they are not sitting in office, they're all in the field. Okay, so that control is a very important task. You should be able to know, as a sales manager, you should be able to know where your team is working today, what are they doing in the market, how much revenue they have generated, how much sales they have done, how much calls they have made. Everything should be under your supervision. Okay. Designing career growth plans, building relationship strategies with key customers. Okay. Every salesperson who joins as a salesman, sales executive, sales officer, he needs a career growth plan. Okay. He needs to become a manager tomorrow. He needs to become a national manager tomorrow and a director tomorrow. So what is his career growth plan? How does he build up relationship with his customers? Because in selling, relationship, as we just came to know, relationship is one major aspect. Okay, relationship building. So what are the strategies that he makes relationship with the key customers? Integration of technology with sales. With so much of technology today, in fact, the whole reporting system for the sales team has changed. In the last 20-30 years, sales teams reporting structure, the customer relationship management methods, systems, have everything changed. We have got their mobile applications which is a CRM for them, customer relationship management tool for them. They have data for where that actually tracks them, what they are doing in the field, where are they, etc. through GPS. Then they will also be able to record the customers, details there, the order booking there, the order replacement there, the invoice generation there, everything they do in that application. Okay, and that is a major thing. That's a major thing, because हमारे ज़माने में, when we worked in sales in our earlier days, 86, 87, and before that, we used to do everything in pen and paper. बड़े शीट्स होते थे, इतने लंबे शीट्स होते थे, उसमें एक्सेल जैसे कॉलम्स एंड रोज बने होते थे, हम लोग उसमें लिखते थे इस रिटेलर का ये ऑर्डर है, ये स्टॉक है, ये इन्वेंट्री है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, एंड देन वी यूज्ड टू मेक रिपोर्ट्स. इतना बिलिंग हुआ, इतना पेमेंट है, इतना पेमेंट बाकी है, सो ऑन एंड सो. आज के दिन में you don't need to, life has become much easier. Technology has come in, life has become, today every salesman of Unilever is connected to the office through that small application, real time. A manager sitting at office can know where is that salesperson working across the country. Okay. Augment the sales force by augmenting the sales closing process. Okay, so basically what it says is support the sales force by supporting the sales closing process, because sales closing, we all know, is the biggest challenge for closing the sales. Is basically you're securing the order. Okay. So help the sales force, augment the sales force by helping them to secure order. That is the purpose. So the whole management is behind them. So nobody is there to just danda chalane ke liye. Okay. If there is a sales manager, sales supervisor, he is there to support the sales team to generate more order, to close more sales, to make more relationships in the market.
Okay, so all of them put together help the sales team to succeed too at the end of the day. So management, sales management has a huge role to play. Okay. Industrial selling in a B2B selling, basically there are 4 categories. One is selling to the reseller. Okay, so resellers are people who are sort of wholesalers. Okay, the distributors of B2B selling, the brokers, the agents of B2B selling. ठीक है, एक बिजनेस और दूसरे बिजनेस के अंदर में इंटरमीडिएट जो लोग रहते हैं, they are called resellers. They can be big wholesalers, they can be big agents, they can be big brokers. ठीक है, they can be big distributors. ठीक है, selling to business users, straight away going and selling it to another user. One user, one company selling it to another company. So something like today Xerox is a photocopier company. Their salespeople go to another company who needs a photocopier machine and sells it directly to it. Today, Eureka Forbes is a vacuum cleaner company. Eureka Forbes goes to airlines, Airport Authority of India, and sells robotic vacuum cleaners to them for cleaning their airport premises. Okay, straight away to the business user. Okay, institutional selling, basically selling to institutes like any institute, educational institute, hospitality industry institutes, whatever. Okay, whoever needs for one industry, going and selling it to another industry. So think about education institute. So education institute needs a lot of software. They need a lot of computers. They need a lot of stationaries, and there are companies who come and sell it to them. Okay, so institutional selling. There are hospitality industry like hotels, restaurants. So selling to them is also institutional selling. There are tourism industry. Okay, railways, airlines, these are all institutions. You go and sell it to them there. Okay, sell it to government. Okay, government is a huge place for B2B industry. So they purchase a lot of things across. They also have industries, right? Government has steel industry, government has power industry, government has textile industry, everything they have. They have their own offices, they have their own institutions. So there are companies who go, government sells to government, there are private who sells to government. Correct. Okay, got it. Any questions? Any questions still here? Clear, sir. Okay. Okay. Retail selling to the ultimate consumer for personal or non-business consumption. Okay. So basically through retailers, when we go and sell, so all the FMCG companies, when they take orders from the retailers and they go and sell to the retailers, for the purpose is that the retailer will sell it to the consumers. Okay, and it can be for non-business consumption also. Okay, personal or non-business use also. Okay, service selling. So अभी तक तो हम लोग good selling की बात कर रहे थे. Now service selling, basically activities or benefits provided to consumers. Services are intangible in nature. हम लोग पहले ही जानते हैं. Services are intangible in nature. We cannot see it, we cannot touch it, we cannot smell it, we cannot hear it, neither we cannot touch it. Okay, so services are intangible in nature. Still, we need to produce it and we need to sell it to consumers. Okay, suppose a doctor has to sell his treatment to, sell his service to customers, right? There are plenty of doctors. How will we know that which doctor is good, which doctor is bad? Okay, so they have to sell themselves. So today there is technology, today there is a lot of marketing promotion activities going behind doctors, hospital, and they sell themselves, correct? They sell their services, okay? And of course, we know that services cannot be standardized. Okay, the processes in delivering the service are not standardized. One garage servicing a Maruti and another garage servicing a Maruti will have different ways to service the car. They are not standardized. They're not. It's not like a soap. I go and buy a Lux soap today and I buy a Lux soap tomorrow. Both will be same. They are standardized products. Services are always different. They cannot be standard. That's becoming more and more challenging to sell a service actually, because they are not standard. There are a lot of questions behind each and every service that you have to answer to your customers and consumers. Okay, उतना normal product में उतना नहीं होता है. साबुन है. Okay, this is what is there in the product and this is what is there in the packaging. You see it, you like it, you buy it. If it's an iPhone, it's an iPhone. I know the features, I know the advantages and know the benefits. But for a service, you actually go and tell it to the consumer. Because इस service में ये है, ये advantages है, ये features है, ये advantages है, ये benefits है, and how will it actually be a solution to them? Correct? Okay. Okay, the different types of personal selling.
First one is very, very simple. Order takers. I'll give you an example. So who are order takers? Basically, anybody who goes to the customer and asks him, simple asks him, चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए. He doesn't have anything to do with selling. He just goes and takes the order, writes the order, comes back. ठीक है. And usually जो FMCG कंपनीज होते हैं, जो प्रोडक्ट माने कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज होते हैं, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स पीपल होते हैं, दे आर यूजुअली ऑर्डर टेकर्स. ठीक है. वो रिटेल में जाते हैं और जस्ट पूछते हैं कि कितना लक्स चाहिए, कितना डॉग चाहिए, कितना सनसिल्क चाहिए, एंड वो ऑर्डर लिखता है और आ जाता है. He doesn't take any effort to sell a new product or push any new product or an old product. ठीक है. आपको 3 पीस चाहिए, मैं 6 पीस देता हूँ, ये बोलने का भी they usually don't do it unless they are very, very good and they they really care for it. A salesperson should be able to push products, right? But an order taker usually doesn't push products. So there is a difference in the market that you often say, अरे ये बंदा तो ऑर्डर टेकर है, खाली जाता है ऑर्डर लेके आ जाता है. ठीक है. He's just a service guy. दुकान में जो चाहिए ऑर्डर लेता है, आ जाता है. क्लाइंट को जो चाहिए ऑर्डर लेता है, आ जाता है. He doesn't push the product. He doesn't actually go and do the selling. ठीक है. Then there is condition. Sorry. Conditions only when the product has the strong market presence. So if just Correct. like in Surf Excel, so they know very well that whatever the consumers came, so they will buy the Surf Excels. I know. Only thing is that पता है क्या होता है? I'll tell you the difference. Now, if there is a good salesperson, you remember we spoke about 2 things: numeric distribution and weighted distribution. हम लोग बात किए थे ना, numeric distribution, जितने ज्यादा दुकान में माल दोगे, spread the product to as many shops. So how do we grow our sales? We grow our sales by 3 ways. We remember we said sell more to same, sell more new to same, and sell new to new. Remember SMS, SNN and SNS बताए थे ना. तो sell more to same की जब बात आती है ना, कि एक दुकान नॉर्मली 3 पीस लेता है, उसको अगर मैं 6 पीस देना चाहता हूं, अगर वो 6 पीस रखे तो चांसेस है कि उसके पास कोई नया कंज्यूमर आए तो उसका माल कभी खत्म ना हो. उसके पास एवरी टाइम माल पड़ा रहे. 3 पीस रहे और वो माल खत्म हो जाए वीक के बीच में, तो नेक्स्ट वीक तक उसको वेट करना पड़ेगा. एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें ये भी सोचना है कि उस दुकान में मेरा कंपटीटर कितना बिकता है. अगर कंपटीटर 12 पीस बेच रहा है, मैं 3 पीस बेच रहा हूं, can I increase my quantity from 3 piece to 6 piece? So that's called depth of distribution. ठीक है. And when I go to more number of shops, it's width of distribution. मैं लखनऊ शहर में या वाराणसी शहर में फिलहाल 500 दुकान में हूं. Can I go and sell my product to 700 outlets? Can I go and find those 700 outlets? Because possibly competition has reached there, I am not there. That's what is a salesman's exact job. कि थोड़ा extra बेचो, नया product. And then again, selling new product to new stores. That needs a real good selling skill, right? That's not an order taking, because new store will not take a new product unless you really give him good reason to buy it. And that's selling, that's salesmanship. Okay, that's the difference between an order taker and a salesperson, a good sales guy. ठीक है. ऑर्डर टेकर सिर्फ जितना माल चाहिए दुकानदार को 4 पीस लेता है, वो 2 पीस खत्म हो गया, दुकानदार बोलेगा 2 पीस दे दूंगा. अगर मैं अच्छा सेल्स पर्सन हूं, मैं उसको बोलूंगा नहीं इस बार एक स्कीम है, आप 6 पीस रख लो. Right. That's the difference between a order taker and a sales. I'll come to that. Just give me 2 slides. Delivery salesperson who just simply goes and order आ गया, उसको deliver करना है. That's the delivery products to the customers. And outside order taker responds to customers' call. So basically you attend to customers' call. Customer ने आपको बुलाया, आप call किया, you have to answer him, you have to take his order and so on and so forth. It comes from outside. Inside order taker, I will go to the customer and take orders. Outside order takers, customer will call me and give me orders. Both things can happen, correct? Order creators, this is what I was talking about. So difference between an order taker and order creator is persuades customer to promote a seller's brand. Either goes to more retailers and more clients and sells products,
or sells more quantity to the same client, or sells a new product to the same client or the old client. This is the difference between an order creator and an order seller. He persuades. This guy, order creator, is a guy who persuades actually. जो पीछे पड़ता है customer का कि ले लो. And he has to, of course, give a lot of reasons to sell the product for him to buy for the customer to buy the product. Correct. So do you understand between an order taker and order? You will find, आप कभी भी आपके company के, if you go over to the field and work with your salespeople once, okay, you will understand who is the order taker and who is the order creator. And we need more of order creators than more of order takers. Order takers, so okay, anybody can take orders. You don't need a salesmanship skill there. But order creators, you need a salesmanship skill. Okay. You need the selling techniques. You need that training. Okay. Order getters, set of people who persuades customer to make a direct purchase. Okay. Organizational salesperson, consumer salespeople, technical salespeople, merchandisers. These people are almost all the time, they are, order creators. When they go B2B, you cannot just take orders. You have to go and sell them. Hardcore selling karna padega. Salesmanship dikhana padega wahan par. Persuade the customer there. If you go to a consumer and sell, sometimes he needs to be a hardcore salesman. Consumer will just not give you orders. Na? ऐसा तो नहीं है कि भैया आए हो आप ले जाओ 3 piece का order. You have to actually sell him. ठीक है. Technical sales people, technical support people. They always need to sell. Na? They have to tell the technicalities of the product. They have to explain them. They have to tell the features, advantages, and benefits. They also have to give technical support. He can finally merchandisers. Merchandisers are people who take care of visibility of the product in store. Okay, it can be in retail store, physical stores, जहाँ पर हमें अपना product दिखता है सजा हुआ. So modern trade store, kirana store, वगैरह वगैरह वगैरह. It can also be in the e-commerce platforms. Okay, today, whatever products are visible there is a whole merchandising team sitting behind to see what kind of visibility has to be given to what kind of product. Okay, so merchandising support is also important because merchandising sells. Merchandising your product ensures that they are silent salespeople. When your product is there in the supermarket, okay, supermarket mein jab aapka, suppose any product which is displayed in the supermarket, Cadbury's chocolates displayed in the supermarket, there's no salesman to sell it. That product itself, the display itself acts as a salesman. Agar acha display hai, customers actually go and see the product there. आपने खुद भी देखा होगा कभी कस्टमर कभी सुपरमार्केट्स में जाके इतने प्रोडक्ट डिस्प्ले रहते हैं जहां पर अच्छा डिस्प्ले होता है ना आप एक बार जाके झांक के तो देखते हो यार प्रोडक्ट क्या है ठीक है ना आप जब मॉल्स में घूमते हो अच्छा शोरूम्स होता है उसके बगल से जब जाते हो थोड़ा 1 मिनट के लिए रुक के देखा रहे यार क्या है बड़ा अच्छा दिख रहा है तो द डिस्प्ले देमसेल्व्स आर साइलेंट सेल्स पीपल ठीक है दे एक्ट एज साइलेंट सेल्स पीपल दैट्स व्हाट मर्चेंडाइजर्स जॉब्स आर कि उसको कोई भी प्रोडक्ट को अच्छी तरह डिस्प्ले करे कोई भी दुकान को अच्छी तरह डिस्प्ले करे सो दैट द कस्टमर्स कम एंड बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर ओके सो selling function, the order takers, order creators, and order getters. The order getters are नीचे से अगर शुरू करें the sales support people and the frontline sales people, organization, business, consumer, technical, merchandiser. Order creators are missionary sales people, single sales people, 101 sales people जो खुद जाके product pitch करके product selling करके आता है either to a B2B एक organization को कहीं भी जाके खुद बेच के आता है. He might be doing it through verbally और एक presentation करके कैसे भी ठीक है मिशनरी सेल्स पीपल बोलते हैं ही इज ऑन अ मिशन टू सेल इट ठीक है एंड ऑर्डर टेकर्स इनसाइड ऑर्डर टेकर्स रेलेवेंट सेल्स पीपल एंड आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स ठीक है अप टू हियर इज इट क्लियर एनी क्वेश्चंस ठीक है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग दिस इज अ बिग चैलेंज बिकॉज आप तो आज मैनेजमेंट पढ़ रहे हो इसीलिए समझ के हो व्हाट इज सेलिंग एंड व्हाट इज मार्केटिंग बट बाहर आपके घर के बाहर जाके 10 लोगों को पूछो तो ऑल विल से मार्केटिंग मतलब सेलिंग करते हो ना आप मार्केटिंग में काम करते हो मतलब माल बेचते हो ना आइडियली हम लोग माल ही बेचते हैं ठीक है सब लोग माल बेचते हैं बट उस माल बेचने में भी डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करते हैं somebody in marketing creates a product somebody in marketing creates advertising and media somebody in marketing creates distribution somebody goes and sells ठीक है so selling is a part of marketing full marketing
ठीक है, द फोर्थ पी जिसको हम लोग बोलते हैं ना प्लेसिंग, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लेसिंग, ठीक है. सो selling is more of emphasis on the product and marketing is more of customer need and wants. Correct. The first day से हम लोग वही सीख रहे हैं ना, marketing is all about customer needs and wants. Correct. Company manufactures the product first and then decides to sell. Company first determines customer needs and wants and then decides how to deliver product to satisfy the wants. अब आप मिला लो, जब हम लोग पहले से बात करते आ रहे, does it match? I said always ना कि don't make a product and then go and sell to the customer. Because तब आप क्या कर रहे हो, आप गले पे ठूस रहे हो. मैंने प्रोडक्ट बना दिया, आपको लेना ही पड़ेगा. But if you are a real good marketer, what you will do is company first determines the customer's needs. आप पहले customer का need and want find out करोगे, and then you will try and satisfy his need and want through your products. Correct? Makes sense? सेल्स मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड. सेल्स मैनेजमेंट का काम ही है मेरा सेल आना है, वॉल्यूम आना है, रेवेन्यू आना है. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड. ठीक, वो सिर्फ प्रॉफिट समझता है, बिजनेस है वो. ही हैंडल्स बिजनेस, ही हैंडल्स ब्रांड्स मींस ही हैंडल्स बिजनेसेस. सो ही अंडरस्टैंड्स ओनली प्रॉफिट. ये चीज दिमाग में घुसा लो. मेघ, सचिन, फ्यूचर में कभी मार्केटिंग में रहोगे तो याद रखना, दैट इज पॉसिबली द main line of difference between you as a marketer and your team sales people. आपका सेल्स पीपल का काम ऑलवेज होगा कि मैं कितना ज्यादा वॉल्यूम बेचूं, कितना ज्यादा सेल रेवेन्यू लाऊं कंपनी के लिए. उसके लिए मुझे डिस्काउंट देना पड़े, प्राइस कम करना पड़े, इट डजंट केयर. बट एज अ मार्केटर, आप जब मार्केटिंग में जाओगे, आप जब ब्रांड हैंडल करोगे, आपका मकसद ये होगा, योर पर्पस विल बी, नहीं, दिस इज माई बिजनेस नाउ. I am not selling only, it's my business. So my business needs profit. So I can't go and cut prices. Every time your sales team will come and tell you, sir, price बहुत ज्यादा है, sir, price थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, कम कर दो, मार्जिन कमा दो, घटा दो, ये वो. बिकॉज उसको सस्ते में बेचना है. प्राइस कम कर दोगे, बेचना इजी हो जाएगा. बट फॉर यू, आप प्राइस कम कर दोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, कभी कभी आपका लॉस हो जाएगा. कैन यू अफोर्ड टू डू इट? जिस ब्रांड को आपने जन्म दिया है, एज अ मार्केटर यू हैव गिवन बर्थ टू अ ब्रांड, यू हैव गिवन बर्थ टू अ बिजनेस. दैट मींस कैन यू अफोर्ड टू लूज ऑन दैट? आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया, उसका प्राइसिंग बनाया, कीपिंग इन माइंड उस प्रोडक्ट का वैल्यू. योर पर्पस इज टू कम्युनिकेट दैट वैल्यू टू द कस्टमर सो दैट कस्टमर फील्स इट्स द राइट प्रोडक्ट एट दिस प्राइस. आज आईफोन 15 प्रो 1,99,000 में बिक रहा है, वहीं पर रेडमी बिक रहा है 7,000. दोनों मोबाइल फोन है, लेकिन आईफोन 15 प्रो के पीछे लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगाए बैठे हुए हैं लेने के लिए. Why? Because iPhone is able to sell the value of that product to the customer. Customer has understood the value of the product. Same thing if you try to go and sell a Redmi at 1,99,000, will it sell? No. Because Redmi could not sell the value of the product. Redmi could not make me understand that this product's value is worth 1,99,000 rupees. Correct. Got it. So as a marketer, always remember, as a marketing person who handles brands, your brand is your baby. You have given birth to that business and you have all the right to earn profit from them. And to earn that profit, you have to communicate with the customer rightly, so that the customer understands the right value of the product. Then only will say this product is worth this price. So कभी भी अगर आपका product बिकता नहीं है, लोग बोलते हैं कि price बहुत ज्यादा है, then make sure that you have communicated the values of your product rightly to your customer. Otherwise, सब बोलेंगे यार ये तो क्या है, 1,99,000 रुपया किस लिए देना है इसको. अगर मैं ये बात बोली, इसका मतलब इस प्रोडक्ट का वैल्यू मैंने सही तरह समझा नहीं है, इसका फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स मैंने ठीक तरह समझा नहीं है, इसके नॉलेज मेरे पास पूरा नहीं है. So as a marketer, communicate that knowledge properly to get the right price. Correct? Did I make you understand what I'm saying? The difference between a sale, the major difference between selling and marketing. Seller always बोलेगा price कम कर दो.
प्राइस कम करूंगा तो ऑब्वियसली सेलिंग इज इजी। आज अगर वही 1,99,000 का आईफोन प्रो को मैं 29,000 में बेचता तो मुझे सेल्समैन की जरूरत नहीं होती, राइट? अपने बिक जाता। But to sell it at 1,99,000 rupees, I have to do a real good marketing, real good promotion, real good communication, so that my consumers understand the value of the product. So value means the features, the advantages, the benefits, the quality, the service, everything together. Correct? Got it? Planning is short-term oriented in terms of today's product and market. So for a salesperson, मेरे को अभी का जितना बेचना है, 1 महीना 2 महीना मेरा टारगेट जितना है उसको करना है. But for a marketer, planning is long term. मेरे को इस प्रोडक्ट को आगे 10 साल, 15 साल, 20 साल लाइव रखना है. I have to continuously innovate, renovate, value add, and differentiate the product so that it's live in the market. It can sustain in the market. It can be profitable in the market. But salesman क्या सोचेगा, मेरे को इस महीने का टारगेट करना है. Correct. Stresses needs of a seller. A salesman always अपना नीड सोचेगा. मेरे को इंसेंटिव कमाना है, मेरे को कमीशन कमाना है, मेरे को ज्यादा वॉल्यूम बेचना है, मेरे को रेवेन्यू जनरेट करना है, बस. And marketer always stresses on the needs of the buyer, the consumer. Consumer को क्या चाहिए? Sir, I have a doubt. Yes, बोलिए. सर जैसे भी आपने बताया कि मार्केटिंग सेलिंग जो है सेल्स ओरिएंटेड है एंड सेल्समैन आगे बोल सकते हैं कि प्राइस ज्यादा है, तो सर कंज्यूमर बिहेवियर में भी तो ये एक चीज होती है कि कंज्यूमर्स बार्गेन बहुत करते हैं, वो सोचते हैं हमें कितने कम पे मिल जाए. करेक्ट. कंज्यूमर बार्गेन करता है, इट्स अ पार्ट ऑफ हिज राइट टू बार्गेन. ठीक है. यस सर. तो Only thing is that consumer तभी bargain करेगा when he feels that the value of the product is not worth the price you are charging. क्या आज के दिन में एक बात बताओ, कल yesterday iPhone 15 Pro लॉन्च हुआ है. यस सर. ठीक है. 89,000 से 1,99,000 अब तक. ठीक है. कंज्यूमर iPhone 15 Pro का 1,99,000 पे बार्गेन करेगा? नहीं करेगा. नहीं करेगा ना. क्यों नहीं करेगा? उसका भी तो कंज्यूमर बिहेवियर है, राइट टू बार्गेन है. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ही और यू एंड मी या मे हु आर द कस्टमर्स, हम जानते हैं उस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, उस प्रोडक्ट का फीचर क्या है, एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, क्वालिटी क्या है, सर्विस क्या है. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई आई डोंट बार्गेन देयर. लेकिन मैं पालिका बाजार दिल्ली में जाके बार्गेन करता हूं. जी सर. क्यों करता हूं? पालिका बाजार दिल्ली में, लिंकिंग रोड मुंबई में, फैंसी मार्केट मुंबई में बार्गेन क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है वो जीन्स जो वहां पर बिकता है वो ओरिजिनल नहीं है. ठीक है. उसका प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, फीचर्स है, एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है, क्वालिटी है, सर्विस है, इज नॉट वर्थ. वो अगर एक लिवाई जीन्स खरीदते हो 5,000 रुपए में और वहां पर जाके एक दुकानदार आपको बोलता है एक जीन्स 5,000 रुपया, आप बोलते हो नहीं यार ये 5,000 की नहीं है. यस सर. क्योंकि उसकी वैल्यू, उसकी जो फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, क्वालिटी एंड सर्विस है, दैट्स नॉट वर्थ दैट वैल्यू. आप परसीव करते हो उसको बिकॉज वो बंदा रास्ते पे खड़ा खड़ा बेच रहा है. वही सेम जींस वो एक बुटीक शॉप में ले जाके लिवाई नाम से बेचना शुरू करेगा, आप उसको 5,000 में लोगे. क्योंकि इमीडिएटली ब्रांड पे आपका एक ट्रस्ट. वाई वी नीड ब्रांड. हम लोग ने सीखा था ना, ब्रांड का सबसे बड़ी बात क्या है? ट्रस्ट. यस सर. जैसे ही ट्रस्ट की बात आती है, आपके लिए सब कुछ हार मान जाता है. आप बोलते हो यार लीवाई है यार, इसका क्वालिटी तो बेहतरीन है. ठीक है. लीवाई है, इसके जीन्स का मटेरियल ही बहुत अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छी है, ये फटता नहीं है, सालों साल चलता है, तो इसके एडवांटेजेस ये है, इसके बेनिफिट्स ये है, इसकी क्वालिटी ये है. और यू स्टार्ट वेइंग दैट वैल्यू विद द प्राइस. वही प्रोडक्ट रास्ते पे आ जाएगा तो आप बोलोगे यार ये तो 1,000 रुपए में बिकना चाहिए. Do you understand? Did I answer your question, Srijan? जी सर. ठीक है. Yes. So the point what I'm trying to make is try to make the customer understand the value of your product. If the customer understands the value of your product, he will be ready to pay the right price. For that, you need to communicate to the customer rightly. आज वो दुकानदार जो रास्ते पे खड़ा खड़ा लिवाई बेच रहा है छप्पा मार के, he will never be able to communicate the quality, the value, the service of that product to the customer.
है ना? यस सर। लेकिन वही वही ब्रांड आप अगर बुटीक, आप अगर सुपरमार्केट मॉल में जाके लिवाई का जींस एक लिवाई स्टोर से खरीदते हो, आप बोलते हो हाँ वहां का जो सेल्समैन है वो आपको समझा रहा है, बस इसमें ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 5 साल फटेगा नहीं, ठीक है एक्सेट्रा वट एवर, एंड देन यू से यस यस लिवाई ब्रांड है ना। जब ब्रांड की बात आती है तो ट्रस्ट की बात आ जाती है, देन यू से नो आई विल बाय इट। यस सर। ठीक है, आप कभी टीवी खरीदते हो घर के लिए, सपोज आप एक सोनी टीवी खरीदते हो, सैमसंग टीवी खरीदते हो, यू गो एंड बार्गेन देयर? नो सर। नहीं, यू डोंट गो एंड बार्गेन। आप थोड़ा बहुत पूछते हो थोड़ा कम होगा क्या, हाँ थोड़ा बट आप उसको कंपेयर कभी नहीं करते हो एक लोकल ब्रांड के साथ, करेक्ट? आप उसको टीसीएल के साथ या वाई के साथ कभी कंपेयर नहीं करो, क्योंकि आप जानते हो सैमसंग इज अ मच बिगर ब्रांड, सोनी इज अ मच बिगर ब्रांड, करेक्ट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कंज्यूमर बिहेवियर जो बोल रहे थे, दैट डिफरेंस कम्स इन हियर। ओके, यस सर। okay, view business as a goods producing process, view business as a consumer satisfaction। तो आज फॉर अ सेल्स पर्सन, कंपनी भैया मैन्युफैक्चर कर रही है, उसे बेचना है, ठीक है? फॉर अ मार्केटिंग पर्सन, दिस इज अ प्रोसेस टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स, ठीक है? आई एम प्रोड्यूसिंग, आई एम प्रोडक्ट्स to satisfy the customer's needs, wants. So the better way I do it, the better products I manufacture, better products I produce. Okay. Emphasis on staying and existing quality, technology and reducing cost. Okay. So sales person always बोलेगा यार इसको improve मत करो क्वालिटी में, जो प्राइस है उसको रहने दो, कॉस्ट जो है उसको रहने दो। फॉर अ मार्केटियर, इनोवेशन इज की। मैंने बोला था ना, कंटिन्यूअसली इनोवेट, रिनोवेट, वैल्यू एड एंड डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। सो मार्केटियर कंटिन्यूअसली वो करेगा, बिकॉज मोर इनोवेशन, रिनोवेशन, वैल्यू एडिशन एंड differentiation he does, the better price he can earn, he can keep his competition away from him, he can keep his customers satisfied. But salesperson doesn't want that. Salesperson want मेरा प्राइस कम ही रहे, टेक्नोलॉजी जो है वो रहने दो, कॉस्ट कम रहे तो प्राइस कम रहे चलेगा, ठीक है? दोनों में डिफरेंस, मेंटालिटी का डिफरेंस होता है, ठीक है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क एज हाईली सेपरेट एंड वाटर टाइट कंपार्टमेंट। सेल्स पीपल एकदम सोलो पे काम करते हैं, ठीक है? अभी नहीं करते हैं, अभी तो फिर भी दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, बट एक जमाना था सेल्स पीपल यूज्ड टू वर्क एब्सोल्युटली इन वाटर टाइट कर, अपना अपना जगत है, उस जगत से बाहर में नहीं जाऊंगा। बट मार्केटिंग को सारे डिपार्टमेंट के साथ चलना पड़ता है, बिकॉज मार्केटर्स ओन बिजनेसेस, दे ओन ब्रांड्स। सो अ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेट इन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनर, द सोल पर्पस बीइंग जनरेटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो वो फाइनेंस के साथ भी काम करेगा, आर एंड डी के साथ भी काम करेगा, प्रोडक्शन के साथ भी काम करेगा, प्रोक्योरमेंट के साथ भी काम करेगा, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, सबके साथ मिलकर काम करेगा टू जनरेट मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है? आज एक मार्केटिंग मैनेजर, एक ब्रांड मैनेजर कैन नेवर से कि बस मेरा काम तो सिर्फ कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट बनाना है, सेलिंग करना है, हो गया काम। नहीं, उसका काम सब कुछ है, प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक सब कुछ। ह्यूमन रिसोर्स भी उसका काम है, बिकॉज ही इज हैंडलिंग, ही इज अ बिजनेस ओनर। सो एक बिजनेस ओनर तो ये नहीं बोल सकता ना कि मैं सिर्फ सेलिंग करूंगा और एडवर्टाइजिंग बनाऊंगा और प्रोडक्शन करूंगा, मेरे एम्प्लॉइज भाड़ में जाए। उसको चारों तरफ नजर रखना पड़ेगा, because he is a profit center, he is a business owner, he has to produce and generate maximum customer satisfaction, ठीक है? And customer satisfaction can be achieved when you have everybody working towards it. आज प्रोक्योरमेंट वालों को भी देखना पड़ेगा, भैया मेरा राइट टाइम पे रॉ मटेरियल आ जाए, पैकेजिंग मटेरियल आ जाए, ताकि प्रोडक्शन सही टाइम पे हो, ताकि मार्केट में सही टाइम पे माल पहुंचे, ताकि कंज्यूमर को सही टाइम पे माल मिले। ह्यूमन रिसोर्स वाला जो है, एचआर वाला है, उसको भी देखना पड़ेगा मेरे पास राइट नंबर ऑफ राइट क्वालिटी ऑफ पीपल है, सो दैट आई कैन सर्विस द मार्केट, सर्विस द लॉजिस्टिक्स, सर्विस द सप्लाई चेन, सर्विस द प्रोडक्शन, सब कुछ मेरा सही टाइम पे, सही जगह पे, सही क्वालिटी पे हो जाए। तो सबको मिला के कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन सेल्स पीपल क्या है, नो भैया मेरा अपना काम है खाली माल बेचो, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता।
मुझे R&D में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपना माल आए मैं बेच दूं, मेरा टारगेट हो जाए बस, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्स पर्सन, सेलिंग एंड मार्केटिंग। कॉस्ट डिटरमाइनिंग प्राइस, कॉस्ट डिटरमाइंस प्राइस, कंज्यूमर डिटरमाइंस प्राइस, दोनों में डिफरेंस ये है कि सेल्स पर्सन बोलता है भैया प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसके ऊपर प्रॉफिट चढ़ाओ और माल बेचते हैं। मार्केटिंग क्या बोलता है, व्हाट डज द कंज्यूमर फील्स दैट द प्राइस शुड बी, perceived value pricing, what is the consumer's thought about the price of this product. Does the consumer feel this iPhone is worth 1,99,000 rupees, or he feels that no, this iPhone is only 1 lakh rupees. मैं कंज्यूमर क्या फील करता है उसके ऊपर प्राइसिंग बनाऊंगा। I can't cross the pricing limits more than what consumer expects. But for salesperson selling, ये प्रोडक्ट का कॉस्ट ये है, उसके ऊपर प्रॉफिट चढ़ाओ, इतना ही प्राइस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए दोनों में डिफरेंस? करेक्ट। याद है हम लोग जब प्राइसिंग की बात कर रहे थे, वी सेड सीलिंग प्राइस एंड फ्लोर प्राइस। सीलिंग प्राइस इज मैक्सिमम दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू पे ऑन द बेसिस ऑफ हिज परसेप्शन, परसीव्ड वैल्यू। अगर कंज्यूमर का परसीव्ड वैल्यू फॉर दिस आईफोन इज 1 लाख रुपीज, आई कांट सेल इट मोर देन 1 लाख रुपीज, I can sell it below 1 lakh rupees, but if I sell much below 1 lakh rupees, then notionally I am at a loss. If my competitor sells as 50,000 rupees, I should be selling somewhere between 50,000 and 1 lakh, because the ceiling price that customers would like to pay is 1 lakh. And I can't sell lesser than my cost price. ये तो हम लोग ने सीख लिया था, कॉस्ट प्राइस से नीचे तो बेच नहीं सकते, तब तो लॉस होगा। तो सेल्स पर्सन क्या सोचता है, कॉस्ट प्राइस जो है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट डालो, बेच दो, हो गया। बट मार्केटिंग पर्सन क्या सोचता है, दो चीज, एक तो है उसको प्रॉफिट बनाना है और उसको प्राइसिंग बनाना है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना प्राइस सोचता है इस प्रोडक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर इज गोइंग टू बाय, ठीक है। सेलिंग व्यूज कस्टमर्स एट द लास्ट लिंक इन द बिजनेस, मार्केटिंग व्यूज कस्टमर एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। दिस इज द मेजर डिफरेंस। सेलिंग वाला क्या बोलता है कि लास्ट कस्टमर को भेज दिया, मेरा काम खत्म। और मार्केटिंग वाला क्या बोलता है, कस्टमर तो मेरा बिगनिंग है। What customer needs, wants, desires, I have to start from there and then make the product, the price, the promotion and the place. For sales people, customer is the last thing. वहीं पर बेचो बस खत्म। उसको कोई फर्क नहीं पड़ी है कि कस्टमर नीड्स, वांट्स, डिजायर कैसे प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करूंगा। How will I satisfy customers' needs and wants and demands? By my product. My selling, reaching the product to the customer is the last thing. But for a marketer, the customer is the first thing. Correct? Because he first determines the customer's needs, wants, and demands. Correct? Any questions on this page? This is a very, very interesting page actually. Nahi, right? Okay. Okay. Sales management process, formulation of strategy, sales management program. The strategic sales program should consider the environmental issues affecting the business. It should organize and plan the company's overall personal efforts and integrate these with the other elements of the firm's marketing strategy. Okay. The strategic sales program should consider the environmental issues affecting the business. It should organize and plan the company's overall personal selling efforts and integrate these with the other elements of the firm's marketing strategy. Now, pehla to hai ki, you remember in possibly one of the first classes, we said the whole marketing environment, okay, has many forces. ठीक है, there is the मार्केट में क्या क्या है, मार्केट में कस्टमर है, मार्केट में कंपटीशन है, मार्केट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, मार्केट में लीगल एनवायरनमेंट है, ठीक है, मार्केट में सोशल एनवायरनमेंट है, मार्केट में 4-5 kind of these forces are there: customer, competition, legal, political, social, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। करेक्ट? रिमेंबर एकदम बिगनिंग में हम लोग ये डिस्कस किए थे
डिफरेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट्स। अब उसी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में मुझे काम करना है, उसी मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बीच में मुझे कंपटीशन को लेके भी काम करना है, मुझे सोसाइटी को लेके भी काम करना है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके भी काम करना है, मुझे पॉलिटिकल सिचुएशंस को लेके काम करना है, मुझे क्लाइमेटिक सिचुएशंस को लेके काम करना है। ठीक है, सब कुछ के बीच में इट शुड ऑर्गेनाइज एंड प्लान द कंपनीज ओवरऑल पर्सनल सेलिंग एफर्ट। ये सबके बीच में सेलिंग इज अ मेजर एक्टिविटी। एंड मैं मार्केटिंग की जितने भी स्ट्रेटजी बनाता हूं, मेरा प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, मेरा प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मेरा प्लेसमेंट स्ट्रेटजी, मेरा प्रमोशन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, एवरीथिंग शुड कोइंसाइड, एवरीथिंग शुड बी इंटीग्रेटेड, दे शुड बी वर्किंग इन हैंड टू हैंड विद द सेलिंग एफर्ट्स। ठीक है, एवरीथिंग इज टू सपोर्ट दैट सेलिंग एफर्ट एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज दैट अफेक्ट द बिजनेस। तो मेरा एनवायरमेंटल इश्यूज कौन कौन सा है? कस्टमर इज एन एनवायरमेंट, कस्टमर एनवायरमेंट में काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर एनवायरमेंट में काम कर रहा हूँ, लीगल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, ऑल दीज में जो भी इशू है, ओके, इसको जो भी इश्यूज अफेक्ट करते हैं, इन दैट देयर इज अ सेल्स टीम वर्किंग. Those are all the challenges that sales team has to support because they are in the market, correct? Sales team has to face. So all my marketing strategies should be able to support that sales team to handle these environmental issues. Correct? Got it? एक सेल्स पर्सन जब मार्केट में होता है उसको चारों तरफ से सारे प्रॉब्लम्स, सारे चैलेंजेस है. His customers are a challenge, his competition is a challenge, his legal challenges हैं, political challenges हैं, बहुत सारे जो 5-6 मैंने बोला, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं. ठीक है, सबको फेस करना पड़ता है. दैट्स व्हाई द मार्केटिंग टीम ऑफ द कंपनी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी का जो स्ट्रेटजी होता है इज टू सपोर्ट द सेल्स टीम्स पर्सनल सेलिंग एफर्ट टू टेक केयर ऑफ दिस चैलेंजेस. ठीक है, सो फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस. What is the strategy that I will do to support the sales management? ठीक है, so that they are able to successfully meet the challenges of the market, meet the issues in the market, the environmental issues in the market. Correct? Okay, got it? Any questions? Okay, implementation of strategy sales management program. So once we have formulated the strategies कि मुझे market में किस तरह support करना है sales team को, now I have to implement those strategies. ठीक है, it involves selecting appropriate salesperson, training, leading them, and motivating them. So starting from recruitment, training, leading them, there should be the sales management leadership, and finally motivating them. And designing and implementing policies and procedures that will direct the effort of salespeople towards achieving corporate objectives. Ultimately, salespeople are there to achieve the corporate goals and objectives. So by recruiting the right people, right training, right leadership, right motivation, right compensation, जो हम लोग बोलते हैं salaries, incentives, and designing and implementing policies and procedures for the sales management or the sales team, will actually give a direction to the sales team to achieve the objective of the company. Okay, so that's how I implement. Okay. एंड फाइनली इवैल्यूएट. सो पहले मैंने स्ट्रेटजी बनाया, फिर उसको इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद उसको मेजर भी करना है, इवैल्यूएट भी करना है कि भैया मेरा स्ट्रेटजी सही काम कर रहा है कि. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस. ठीक है, उसने अपना टारगेट किया कि नहीं, उसने अपना बजट टारगेट किया कि नहीं, उसने अपना वॉल्यूम टारगेट किया कि नहीं, उसने अपना रेवेन्यू टारगेट किया कि नहीं, उसने अपना नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ाने का टारगेट किया कि नहीं, उसका कंट्रोल. ठीक है, वो सही तरह मार्केट में अकॉर्डिंग टू हिज प्लान ऑफ वर्किंग काम कर रहा है कि नहीं. ओके, these are all things that need to be controlled, evaluated. This entails taking corrective steps either in formulation or in implementation of the program to achieve the desired goals. So because we have made the strategy, we have done the implementation, but whether that's in the right track, whether that is effective, whether that's an efficient strategy, that needs to be evaluated from time to time so that we take corrective measures. नहीं भैया, ये टारगेट तो बहुत ज्यादा था, हम लोग ने स्ट्रेटजी तो बनाया था इतना टारगेट करने का, उसके लिए इतना आउटलेट जाने का, क्लाइंट बनाने का, बट ये हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं तो गलत है. हम लोग उसको लेके बैठ तो नहीं रह सकते कि गलत चीज चलने दो. इसीलिए हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, सेल्स टीम को कंट्रोल भी करते हैं, इवैल्यूएट भी करते हैं, एंड सी टू इट दैट द स्ट्रेटजीज आर रीफॉर्मुलेटेड इफ नेसेसरी, री-इम्प्लीमेंटेड, so that we can achieve our corporate objectives and goals rightly.
ठीक है. So first is strategy formulation to take up the challenges in the marketing environment. Second is implementation of the strategies through good recruitment, good training, good leading, good motivation, good policies and procedures. And finally, evaluation, continuous evaluation of the implementation strategies. जो भी हम लोग ने strategy implement किया, जो भी market में काम हो रहा है, उसका evaluation करना, control करना. And to see that if there is anything wrong, let us reevaluate that and revoke on that and make new strategies to implement again. Correct? Up to here is everything okay? Good. समझ में आ रही है कि लैटिन हो रहा है. लैटिन मतलब सर के ऊपर से जा रहा है. नहीं? Sure? Okay. Yes, sir. Okay. What we shall do today is I will not give you a break. 8:30 तक करके we'll stop it today. ठीक है ना? Right, sir. Okay. Emerging trends in sales management. Okay, so there are a couple of new things that is happening in the sales management. First of all, sales management has in a major way changed because of technology. Okay, there is something which is there in the whole market now called the CRM, customer relationship management tools. Okay, even that has come into a mobile application. So a salesperson, if he's working in the field today, he has a mobile applications from morning to evening. First of all, he can be tracked through GPS. वो कर क्या रहा है? ठीक है, if he's supposed to go and meet a client at 9 o'clock, is he there at the client at 9 o'clock? Client के साथ discussion क्या हुआ? Client का order कितना निकला? Client का अगर selling pitch चल रहा है तो client किस stage पे है? Everything is recorded there, and everything is real time. The company has every record of the customer in his computer, in his server. That's the biggest change in technology. Today, you do not have to do any policing behind the customer, behind your sales team. आपको sales team के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा. Everything is there in technology. आज के दिन पे sales team का report, sales report, technology से by default वो निकल के आ रहा था. Sales team को pen and paper में report लिखना नहीं पड़ता. ठीक है, everything is in computer, everything is in laptop, everything is in mobile. He can immediately generate a report and give it to his manager. That's the biggest change in technology. Today, the market is connected, getting connected. The retailers are getting connected to the company through software. ठीक है, today एक रिटेलर के पास कितना माल बिक गया, कितना माल इनवॉइस होके उसके पास आया है, कितना माल ऑर्डर गया है, एवरीथिंग रिटेलर के लेवल से लेके कंपनी लेवल तक कनेक्टेड है. रियल टाइम डेटा. आज के दिन में सम ऑफ द कंपनी तो ऑर्डर जनरेट भी नहीं करती है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए. ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वेंटरी खत्म होते जाता है, ऑर्डर ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाता है, ऑर्डर ऑटोमेटिकली कम्स टू द कंपनी फॉर रिप्लेनिशमेंट. आज ये जो मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स है, सपोज रिलायंस हो गया, आदित्य बिरला हो गया, डी मार्ट हो गया, और वट एवर बिगर वंस, क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गया, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक चेन्स, देयर ऑर्डर इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली. कोई सेल्स पर्सन को ज्यादा नहीं पड़ता है कि ऑर्डर जनरेट करने के लिए. कितना इन्वेंट्री से माल निकल गया, ऑटोमेटिक वो ऑर्डर जनरेट हो जाता है. Yes, sir. And it And goes sir, to, हाँ बोलो. I'm sorry. We have just started activity that we are just monitoring the SKUs geographical factor that किस locations में कौन सा हमारा product जो है Correct. वो बिक रहा है वहां पे, so that we can make the Absolutely. strategy according to that. Absolutely. In fact, आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं भाई कौन सा जगह में कौन सा एसक्यू ज्यादा बिकता है, कौन सा कम बिकता है, वहां पर ज्यादा ये एसक्यू देना है, क्या प्राइसिंग में बिकता है, सब कुछ. एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट विद अस. ठीक है. सो टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट चेंज इन सेल्स मैनेजमेंट. ओके, बिगेस्ट चेंज इन ट्रेंड इन सेल्स मैनेजमेंट. सेकंड, टुडे रिलेशनशिप सेलिंग इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे सिर्फ जाके प्राइस बताओ और प्रोडक्ट बेचो doesn't work. Relationship selling, consultative selling, need satisfaction selling, and solution provider, as I said, these are important trends which has happened. आज के दिन में सिर्फ प्राइस देके मेरा प्रोडक्ट का ये प्राइस है, ये फीचर्स है बोल के माल बेच नहीं सकते. सेकंड थिंग इज देयर इज टू मच ऑफ डाइवर्सिटी. ठीक है, डाइवर्सिटी इन चैनल. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैनल हैज कम इन. डाइवर्सिटी इन प्रमोशन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशन channels have come in. Diversity even in prices. हम लोग देखें कितने differential prices होते हैं. Correct. Diversity even in customers. ठीक है, same product का different kinds of customer are trying to buy it, and
So a lot of diversity in the market, diversity in the retail, diversity in competition, diversity in substitutes, diversity in your channels, diversity in promotions everywhere. ठीक है, new selling methods. ठीक है, अभी तो माने once COVID has come, it has changed further. आज के दिन में तो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होता है टू B2B क्लाइंट्स टू सेल योर प्रोडक्ट्स. ठीक है, सारे B2B क्लाइंट्स को एक साथ लेके या सारे कस्टमर्स को एक साथ लेके ऑनलाइन जूम में या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में या गूगल मीट में जाके वेबिनार करके प्रेजेंटेशन कर दो, हो गया, यू हैव लॉन्च द प्रोडक्ट. पहले जैसा नहीं है कि मुझे दुकान में जाके फिजिकली समझा के लॉन्च करना पड़ेगा. But things have changed a lot. New selling methods are coming. पहले जमाने में हम लोग जाके इंडिविजुअली एक दूसरे को बोल के वर्बली बोल के सेल कर. टुडे वी हैव गॉट आवर palm tops and laptops and our iPads and tabs to go and present the products. ठीक है. Global and ethical issues. ठीक है. Now because of the digital market, digital trends, digital platforms, whole world is transparent. The whole world is at your office. Anything you are doing here in India, yeah, here in Delhi or Mumbai or Calcutta or Chennai or even Varanasi, the whole world knows about it. It takes a second to let the whole world know about it. And just because the whole world knows about it, certain things are good, certain things are not so good. There's a lot of ethicality being followed now. You know, you can't fool around with customers now. आप कुछ भी promotion, कुछ भी advertisement नहीं कर सकते. आप कोई भी product किसी भी quality का नहीं बना सकते because the whole world is watching it. कहीं पर भी छोटा मोटा इधर भी उधर भी हो गया, it will go viral and will destroy your organization. ठीक है. I don't know how many of you remember 2 years back, or not even 2 years, 1.5 years back, just after the COVID, if you remember Myntra's inauguration, they wanted to change their logo. And they changed their logo, and that logo has an interpretation that it was not right for the females. It doesn't look good for females. And there was a huge activism. You know, there was a huge backlash of the organization. And in 24 hours, Myntra had to withdraw the logo. They felt that those activists, they felt that it's an ethical issue. It doesn't show women in the right spirit. ठीक है. 24 hours में they had to withdraw the logo. उस लोगो को बनाने में शायद कितना करोड़ रुपया खर्चा किया होगा. ठीक है. So with this trend changing, there is a lot of global issues, lot of ethical issues which the sales management has to face. ठीक है. आज देखो, आपको अगर याद होगा 2014 में मैगी का इतना बड़ा इशू हो गया था. ठीक है. It started from zero and it became a big fire. The world came to know that there's a big problem in India with Maggi. Who had to face it? The sales team in the field had to face it, right? हम लोग तो ऑफिस में मार्केटिंग टीम बैठे थे, वो अलग बात है. बट वो बेचारे जो फील्ड में थे, जो सेल्स में थे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उनको था ना. दुकानदार बोल रहा था हम लोग नहीं बेचेंगे, उठा लो माल, वगैरह 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 जो भी है. So global and ethical issues are big issues nowadays. ठीक है. And the thing is that it's like a fire. कहीं पर छोटा भी हो गया तो viral इतनी जल्दी हो जाती है issues, it becomes like a fire. So we have to be very careful. These are all trends which are emerging in sales management. Okay. And of course, customer orientation. पहले से बहुत ज्यादा customer oriented. आज you have to keep the customer absolutely सर पे, बोलते हैं ना, चढ़ा के रखो, सर पे चढ़ा के रखो. Customers can go wild anytime, and customers can do a lot of good to you also. आज एक जमाने में, you know, if a customer liked your product, he liked your product. उसने अपने दोस्तों को बताया या अपने फ्रेंड्स को बताया, अपने कलीग्स को बताया, तब तक ठीक है. Today in the era of social media and digital platforms, customers can harm you if they don't like your product, and they can do a lot of good to you also. If they write a good review in the platform, digital platform, it will do always great good to you. It's like a word of mouth promotion, correct? आप फेसबुक में, गूगल में, अमेजोन में जहां भी अपना रिव्यूज देते हो, अगर वो अच्छा रिव्यूज है, they do a lot of good to the customer.
And that's important that you keep engaged to this customer. एक जमाने में अगर किसी कस्टमर को मेक को अगर एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, चलो वो सिर्फ मेक को ही अच्छा लगा, कस्टमर को मालूम भी नहीं है कि वो मेक को अच्छा लगा, क्योंकि मेक ने उस कस्टमर का रिव्यू कभी दिया ही नहीं, कस्टमर को जाके बोला, क्लाइंट को या कंपनी को कभी जाके बोला भी नहीं होगा या अपने दोस्तों को कि वो प्रोडक्ट अच्छा है. हाउ डज द कंपनी नो कि मेक को वो पता है, मेक को अच्छा लगा. टुडे अगर आप मेक को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, यू कैन गो एंड एक्चुअली राइट अ रिव्यू इन सोशल मीडिया और इन Amazon और इन गूगल एंड से दिस प्रोडक्ट इज देयर. Correct. So keeping the customer engaged and in the right good spirit is very important today. मैं ऑलवेज कोशिश करूंगा कि मेरा कस्टमर खुश रहे. आज के दिन एक जमाने में था, ठीक है कस्टमर खुश नहीं है, वो एक आधा कस्टमर इधर उधर होगा, खुश नहीं है, नहीं है चलेगा. बट टुडे वो एक कस्टमर खुश है मैंने बहुत बड़ी बात है, एक कस्टमर नाखुश है वो भी बहुत बड़ी बात है. ही कैन डिस्ट्रॉय द होल ऑर्गेनाइजेशन, है ना. Correct. So these are the emerging trends in sales management and we need to be very careful. It's changing. The world is changing. Okay. And so that's on the sales management part. Any questions here? Any questions? Quickly. We have another 7-8 minutes. We'll. Yes. Any questions? Srijan, Meg. Interesting. No, interesting. Yes, not interesting. ठीक है, चलो. Interesting, sir. Thank you. Chalo. Okay, we'll slowly get into the selling skill. Okay, and strategies. So the selling situations and tasks and functions. The forms of selling include maintenance versus development, selling, contact, technical expert, and important personal characteristics. So there are two kinds of selling. One is development selling. ठीक है. To do development selling, basically हम लोग बोलते हैं ना business development. ठीक है. To generate a new business, you need that development selling. And to maintain that business, retain that customer. ठीक है. You need that again technical expertise and you need to have a service orientation and everything there. So there are two kinds of tasks that you perform. You maintain the customer, you do a selling to maintain that customer, you maintain a relationship with the customer, you do have a service orientation for the customer, because the customer एक बार बन गया उसको maintain करना भी बहुत जरूरत है, which is a very big challenge. Retain करना भी बहुत important है. And the second one is developing that customer, starting with acquiring that customer and slowly developing the relationship with him and taking him for a long time. ठीक है. Retain that customer for a long time. And there is one concept will possibly मैं आपको बता दूंगा बाद में कभी. There is one concept called customer lifetime value. ठीक है. एक कस्टमर आपके लिए लाइफ टाइम में कितना बिजनेस जनरेट करता है. ठीक है. That's something which is a big. Just give me a second. एक कस्टमर आपके लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन हिज लाइफ टाइम कितना बिजनेस जनरेट करता है. दैट्स अ बिग KPI और दैट अ बिग परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ अ मार्केटियर. तीन चीज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मार्केटियर के लिए. एक है प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है, मार्जिन्स. सेकंड वन इज ROI क्या ला रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या ला रहा है. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, उसने जितना कस्टमर जनरेट किया है उसका लाइफ टाइम वैल्यू क्या है. सो जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. सपोज एयरटेल मोबाइल फोन सिम कार्ड्स आप लोग खरीदते हो या वोडाफोन का या रिलायंस का किसी का भी खरीदते हो. फर्स्ट डे यू गो एंड बाय अ रिलायंस प्रीपेड कार्ड. ठीक है. पॉसिबली यू पे 600 रुपीज फॉर अ सर्टेन GB. ठीक है. ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड सर्टेन फीचर्स that they are going to give you. ठीक है. फ्री कॉल्स, फ्री मैसेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. एंड 600 रुपीज में दे हैव एक्वायर्ड अ न्यू कस्टमर. एक उसमें एक सिम कार्ड का प्राइस है, प्लस उसमें आपको सर्टेन चीज दे रहा है वो लोग, सर्टेन फीचर्स दे रहा है, सर्टेन एडवांटेजेस बेनिफिट दे रहा है, उसका प्राइस. नाउ नेक्स्ट मंथ यू हैव टू रीफिल दैट अगेन. दैट हैज अ 30 days period. Next month again go and you refill that for 500 rupees.
Third month, again, you go and refill that for 500 rupees and so on and so forth. So every month when you are refilling it, you're generating business for the organization. Same region, एक customer, उस organization का next 2 साल में या 5 साल में या 10 साल में, how much business has he generated for you? Now, has this been a profitable business? That something needs to be calculated, because when you come back to him and continue buying that service from him, he is also spending some cost on him. आपको एक एप्लीकेशन दिया है, आपको एक बिलिंग कर रहा है, आपके पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, आपको वो कस्टमर सर्विस दे रहा है, आपको वो कभी कभी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है आपके लिए, बहुत सारा कुछ कॉस्ट है. So if the cost is more than what you give him back, then of course you are going to get into losses. ठीक है, ये कॉस्ट बढ़ते जाती है. As you grow with inflation, the cost also goes up. Technology का cost है, because they have given you some technology. There's a cost for these applications that they are creating for you. There's a cost for the service that they are giving to you and everything. Correct. So at one point of time, the cost is more than the revenue. And that's the time you make losses. So the lifetime value, if you have to calculate the lifetime value, we actually calculate कि ये बंदा, एक कस्टमर कितने दिन तक मेरे पास प्रॉफिटेबल है. उसके बाद ऑफ कोर्स मैं उसको छोड़ तो दूंगा नहीं, because I have acquired him. Now to retain this customer, how do I retain this customer profitably? Either I upsell him something, cross sell him. इसीलिए आप आजकल के दिन में अगर आप रिलायंस या वोडाफोन या एयरटेल कुछ भी लेते हो, आप देखना कुछ दिन के बाद से वो आपके पास आ जाएगा. आप एयरटेल इंटरनेट कनेक्शन लो घर के लिए, एयरटेल टेलीफोन कनेक्शन लो, एयरटेल टीवी डिश टीवी ले लो, एयरटेल ओटीटी ले लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. They will upsell you, they will cross sell you. आप एयरटेल का 100 GB प्लान लिए हो सर, आप उसको 200 GB प्लान ले लो, आपके लिए स्कीम है. So why do they upsell you and cross sell you? Because they want to add more business to their kitty and make you a profitable customer continuously. So that is customer lifetime value, and that is why I said developing a customer is good. Developing a business for the first time, getting that business is good, but maintaining and retaining that business is more challenging. Did you understand? समझ में आ रही है अभी थोड़ी बहुत? Yes, sir. Correct. So you not only acquire a customer, you retain a customer also. That's important for a business. ठीक है, मैं एक बंदे को मैगी पहली बार खिला दिया, फाइन, उसने आके पहली बार मैगी खरीद दिया, but does he repurchase that Maggi? How many times in a year does he repurchase the Maggi? What is the consumption of Maggi per head in the home? Can they increase the consumption at home? पहले हफ्ते में एक मैगी खाता था, can they have 2 Maggi at home? How do they do that? That's the challenge. ठीक है, and their sales team also has a big role to play. Okay, maintenance selling involves the act of servicing the existing account, जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को. So securing promotional cooperation, counting inventory, taking replacement orders, delivering the product, everything. And development sales people engaged in development selling are called business development sales people. Correct. As they try to contact potential customers and build business for the firm, the real sales people. Creators, जो हम लोग ने बोला ना, creator sales people, these are creators. They create business. Correct. Okay. So today we will end here. Okay. Okay, sir. Okay. Any questions before I end? Okay. No, sir. नहीं? Yes, sir. ओके, कल हम लोग इवनिंग को ही क्लास करेंगे, सुबह मुझे एक्चुअली कुछ काम है. ठीक है, इवनिंग को 7 o'clock करेंगे. ठीक है, जरा इसको सौरभ को बता दोगे एक बार? अच्छा नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूँ. ठीक है, ओके, Okay, sir. ओके, गुड नाइट. Good night, sir. गुड नाइट.